नहीं है। जो कुछ हो रहा है पूरा देश के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हर प्रदेश के लिए हो रहा है। बिहार के लिए जो हो रहा है वो एक बॉर्डरिंग स्टेट, बिहार के लिए दूसरे सारी प्रदेश के का कनेक्शन अगर बढ़िया से हो जाए तो इसका कारण से आज ये एलोकेशन आ रहे हैं। लेकिन सर, जो लोग आज इस बजट या बजटरी एलोकेशन का आलोचना करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ये सब राजनीति छोड़कर कुछ नहीं है, ये एक तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, स्टेट मदरली एटीट्यूड, इसका ऊपर सर हम कुछ आपका सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं सर। सर, ड्यूरिंग द यूपीए regime, मैडम सॉरी मैम सॉरी सर, in 12th March, hopefully, if my memory serves me the right, one of our honorable mic off करो। उधर से। Since 15 March 2012, एक आदरणीय रेल मंत्री इसी यूपीए सरकार की, उसका कहना था इंडियन रेलवेज वाज हेडेड फॉर ICU एंड आई पुल्ड इट आउट, दिनेश त्रिवेदी। ये कौन बोल रहा है? यूपीए जमाने का एक रेलवे मिनिस्टर बोल रहे हैं, और बोलने का साथ साथ ही उसको वहां से निकाल दिया गया। और उसी का बाद में जिस सामने नया आया उसका सामने अब क्या चेहरा देखा आपको? पश्चिम बंगाल में उन दिनों में हम लोग इतना शिलान्यास देखा, चारों तरफ सिलाई सिलाई, ऐसे लग रहे हम लोग पत्थर युग में प्रवेश कर गया। कहां गया वो दिन? आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर श्री वैष्णव for a big allocation for West Bengal in 30,955 crores. It is 3 times than what allocated by UPA under Mamata Banerjee Rail Minister. The railway has invested rupees 68,000 crores in West Bengal. I appeal to all of my friends, अगर आप लोग इस फेडरल सिस्टम के ऊपर थोड़ा भी भरोसा कर सकते हैं, कोई लैंड पॉलिसी बना लीजिए। सिर्फ लैंड का कारण है आज पश्चिम बंगाल में 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? यस, आई डू ऑथेंटिकेट, आज किस हिसाब से बात कर रहे हैं आप लोग? सर, land acquisition hurdle. Out of total 3,040 hectares required for the project, only 640 hectares, 21%, have been acquired, leaving a substantial shortfall of 2,400 hectares, that is 79%, still pending. This land acquisition bottleneck continues today to delay progress. 43 railway projects in West Bengal have been delayed due to the land acquisition issue. Madam, this project at Badbangi has been stalled for 15 years. 15 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद हो गया। 15 साल के लिए ये भावाडांगी प्रोजेक्ट अभी बंद है। उसका कारण पूरा लैंड एक्विजिशन बंद हो गया। माननीय सदस्य, आप लोग बैठे। The railway minister has जो नियम विरुद्ध होगा वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। बैठो प्लीज। Expedite land acquisition and resolve. जो नियम विरुद्ध होगा वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे आप। बोलने दो उनको। In
Encroachment. माननीय सदस्य कंक्लूड करें प्लीज। एक 2 मिनट और मैडम 2 मिनट। Encroachment is a significant problem on railway properties in West Bengal, especially in and around urban centers like Kolkata. Over नियम years, विरोध होगा वो नहीं जाएगा, कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, प्लीज बोलने दें। on railway linear tracks and the station, these poses hefty risk and obstruction plan to lay new lines or at track. माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करें। एक मिनट मैम, एक दूसरा इशू है। Railway officials more than removal encroachment has become a major problem the project. मैडम हो गया खत्म। एक शब्द से हम खत्म करेंगे। सर पहले माननीय सदस्य कंक्लूड कर दीजिए। मैडम पहले ही मैंने बोला, बताया गया है कि जो भी sitting over here, होगा वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। प्लीज बैठे, प्लीज। My gratefulness to them. Across from the party lines, across from the party beliefs, हम सभी सदस्यों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे मेरा भाई ऋतव्रत हो, साकेत गोखले हो, वहां से जयराम जी हो, हम सभी को हम नमस्कार करते हैं और सभी के पास हमने आभार प्रकट करते हैं। प्लीज हम तुम्हारी जिसको बोलने का दिया गया है उनकी बात ये बिहार का प्लीज ऐसे प्लीज बैठे, प्लीज। बिहारी लोगों को कोई सीमा नहीं है। सब अभी आपको भी अवसर मिलेगा, बैठे प्लीज। to conclude uninterrupted. I want your protection, sir. Please, Madam, I conclude want your protection. 1 minute to conclude. It's a complete different issue. Madam, 1 minute. प्लीज। मेरे आई वांट प्रोटेक्शन फॉर माय स्पीकर। इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाए। माननीय सदस्य को बोलने का पूरा अधिकार। ये आप प्लीज बैठे। इतना डिस्टर्ब बोलना प्लीज बैठे आप लोग। सारे का सारा स्पीकर को दिया जाए जो डिस्टर्ब टाइम है। ऑथेंटिकेट करिए। अभी आप माननीय सदस्य प्लीज बैठे आप लोग, प्लीज। मैडम 1 मिनट। 1 मिनट कंक्लूड करें। 1 मिनट कंक्लूड कर देते हैं। हो गया। प्लीज आप देखिए, कोई विरोध नहीं है। सिर्फ मैं सभी सदस्यों को और सभी पार्टी का नेता को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। मैं अभिनंदन करता हूँ। प्लीज सर, थोड़े दिन पहले दिल्ली का चुनाव हो गया। अभी आप लोग की बात भी सुन ली जाएगी। सर, कौन सा चुनाव परिणाम जो भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सभी पार्टी को, जो लोग इधर बैठे हुए, those who took part in that particular election, हम सभी को नमस्कार करता हूं और सभी का अभिनंदन एक बात पर स्वीकार करता हूं। सभी को, इसमें कोई इस पक्ष नहीं है। हम दिल्ली का चुनाव देखा, परिणाम जो भी है वो दूसरा बात है। एक बूमा नहीं, कोई धमाका नहीं, गोली नहीं, किसी का जान नहीं गया, किसी का खून नहीं बहा, किसी का ट्रैक्टर, किसी का घर जेसीबी मशीन से तोड़ा नहीं गया, किसी का आदिवासी का सर मुंडन नहीं हुआ। सर, एक ऐसा चुनाव हम सबका करता हूँ। किसी को 50 आदमी का खून नहीं है, किसी को माइग्रेंट लेबर नहीं बनाया गया। सर, ऐसा चुनाव क्या एक ही देश में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बैठकर चुनाव कर रहे हैं, इसीलिए सबको नमस्कार कर रहा हूँ। जय, हम लोग जानते हैं इसका हिसाब। अब हम तो प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ आपसे इसके लिए। इट इज नॉट मी, नॉट फॉर पार्टी ओनली, इट इज फॉर द कांग्रेस वर्कर्स ऑल्सो, इट इज फॉर द कांग्रेस वर्कर्स ऑल्सो, इट इज फॉर देयर पार्टी। चिदम्बरम जिस पार्टी है एंड जयराम जिस पार्टी, जिसका 8 कार्यकर्ता को मारे गए, चिता जला दिया गया, हम उसी का बात करते हैं, उसका प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसका साथ गले मिला रहे। अरे राहुल जी की कन्वॉय के ऊपर पथरा हुआ है, राहुल जी का कन्वॉय के ऊपर पथरा हुआ है, उसको गेस्ट हाउस नहीं, सर्किट हाउस मिला नहीं। हमारा नेता सदन यहाँ बैठे हुए हैं, नेता सदन 2019 में 83 बीजेपी मार्टर्स के लिए वो गंगा जी का तट पर जाकर सीधी
नीति तर्पण करके चले आए। कौन सा बात चल रही है? I now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना, ये रोहिंग्या को अनिल कुमार यादव मंदादी, प्लीज Member Mike. Thank you, Vice Chairman. yes. सबसे पहले मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी प्लीज आप लोग सीट पे बैठे, आदरणीय राहुल गांधी जी का, ऐसे आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय तेलंगाना राज्य के हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का, और प्लीज शुरू करें। मेरा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, ना बोले प्लीज, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला है। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूं, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है, और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। ये तो है सर, 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर, 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का यह सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर, 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। सर, इन 1957 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। RDSO is a research and development organization. It is a technical advisory and consult to railway board as well as other organizations. केवल वहां तक ही नहीं, आगे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी के काल के अंदर पहला राजधानी का ट्रेन न्यू दिल्ली से हावड़ा का भी उद्घाटन किया गया था। वो हमारे इंदिरा गांधी जी थे, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर पहला मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। सर, मैं यहाँ पे राजीव जी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजीव जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटराइज लाए गए कंप्यूटर सिस्टम्स को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, ये उनका सोच था। लेकिन हम जानते हैं किस तरह से बीजेपी नेताओं ने उसका विरोध किया है। ये राजीव गांधी जी थे जिन्होंने कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशंस का रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ये राजीव जी का काल में शताब्दी ट्रेन न्यू दिल्ली टू झांसी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय में शताब्दी ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर was also introduced. Sir, it is Rajiv Gandhi's government which has also succeeded in Konkan Railways establishment, sir. केवल वही नहीं, हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भी ऐसे ऐसे महान ट्रैक्स जहां पे कनेक्टिविटी नहीं था रेलवे का, भी उस समय में कनेक्टिविटी का काम किया गया था। और मैं बात करना चाहता हूं
मनमोहन सिंह जी के समय में जिन्होंने बायो टॉयलेट का भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही लैंडमार्क डेवलपमेंट कवच का भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। सर इसी सदन के अंदर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय में रेलवे मंत्री के ओर पे काम किया है। उनके काल में भी सर मैं बताना चाहता हूं कि हैदराबाद वाडी दंगा railway line was also sanctioned during Kargeji's tenure and land for project was also allocated. However, progress of this line has been significantly slow. I agree the railway minister to extend the project and need connectivity for the people of Telangana and Karnataka, sir. केवल वही नहीं है सर, यादगीर जिला के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। सर मैं बात करना चाहता हूं मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के लिए काफी वाग्दान किया गया था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। सर उसके अंदर 13th schedule of AP Reorganization Act 2004 it has been stated that railway minister shall within 6 months from the appointment date shall examine the feasibility of establishing a rail coach factory in the successor state of Telangana and improve railway connectivity in the state। इसके बारे में भी कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल रहा है सर। किस तरह से हमारे तेलंगाना राज्य सबसे युवा राज्य है जिसको केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा नहीं है सर। केवल वही नहीं सर, और काफी सारे हमारे तेलंगाना को लेके हम लोगों ने मांग रखी है एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन फ्रॉम सिकंदराबाद टू मछलीपट्टनम पोर्ट, और साथ में आई वुड लाइक टू नो वेदर the demand of Telangana landlocked state rail link between enhanced connectivity to the coast, facilitated industrial growth through the establishment of dry ports within the Telangana state। सर ये सब हमारे तेलंगाना राज्य के लिए वादा किया था, पर अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा सदन में हो रहा नहीं। सर हमारे रेलवेज का एक परंपरा हुआ करता था, हमेशा रेलवेज का बजट जो है एक इंडिपेंडेंट बजट के तौर पे पेश किया जाता था, लेकिन उस परंपरा को आज के सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर दिया है। सर जब उस परंपरा चलता था देश के कोने कोने में राज्य के सरकार, देश के युवा लोग, देश के सभी वर्ग के लोग ये सोचते थे टीवी के सामने बैठ के कि हमारे राज्य को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को आज बजट में क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी उस समय पे रेलवे बजट आता था कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तौर पे चलता है। मिडिल क्लास वाले हमेशा एक लॉन्ग टर्म का वो एक्शन प्लान बनाते हैं, जब छुट्टी मनाना है या बच्चों को लेके कहीं घूमना है तो वो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन उस जिस तरह से बजट आज जनरल बजट से मिलाया गया है, कहीं ना कहीं उनको भी वो प्लानिंग का भी उनका फॉल्स मतलब उनका भी खत्म कर दिया गया है। सर ये जो 92 इयर्स का प्रैक्टिस इन्होंने तोड़ दिया है, ये बहुत ही नुकसान हुआ है। हो सकता है अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का भी हम इंडियन रेलवेज का 100 साल भी सेलिब्रेट करने का मौका हम सबको प्राप्त मिलता था, लेकिन वो उसका भी मौका इन्होंने नहीं दिया है। सर आज का जो स्थिति है, पैसेंजर्स ट्रैवल करने के लिए डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से आज पिछले 6 महीनों का अगर रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर जगह रेल का जो भी प्रदेशों के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर कोई भी कॉमन आदमी ये सोच के आज ट्रेन के अंदर चल रहा है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उनके अंदर एक घबराहट है कि जब भी वो टिकट लेते हैं, जब भी वो टिकट लेके ट्रेन में बैठते हैं, उनके परिवार के साथ जब वो सफर करते हैं तो उनको एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि वो अगले दिन अपने मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं सदन को, फरवरी 28, 2024 जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुआ है। सर जून 2, 2023 कोरामंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर
293 लोगों का मौत हुआ है और हजारों लोग घायल हुए हैं। सर मैं बताना चाहता हूं, जून 17, 2024 कंचनगंगा ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर 8 लोगों की मौत होती है। सर जुलाई 8, 2024 चंडीगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके चलते 4 लोगों की मौत होती है। सर केवल यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं किस तरह से आज अपने रेलवे का हालात बना रखा है। सर फरवरी 25, 2024 कटरा टू होशियारपुर एक ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, जिसके अंदर ड्राइवर भी नहीं है। वो 60 किलोमीटर जाने के बाद उसको रोका जाता है। तो मतलब जिस तरह से आज ट्रेन चल रही है, ना ड्राइवर भी उसके अंदर ड्राइवर का भी कोई नहीं है। सर सर हाल ही में हमने देखा है 16 फरवरी 2025 को जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदौड़ मची है, जिसके चलते हुए 18 लोगों की मौत हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या रेलवेज नहीं है? क्या रेलवे की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटना घटा है? या मैं पूछना चाहता हूं जो 18 लोगों की मौत हुई है इसकी जिम्मेदार कौन है? केवल यही नहीं है, वो लोग कुंभ जाना चाहते थे, कुंभ जाकर वहां पे कुंभ में स्नान करना चाहते थे। हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बार बार आंकड़े बताने की कोशिश किया है कि इस कुंभ के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, कुंभ के अंदर कभी 40 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 60 करोड़ लोगों का उन्होंने बोला है कि उसके अंदर स्नान किया है। जब वो लोग इतने ऑथेंटिकेट से 60 करोड़ के हिंदुस्तान के लोग जब कुंभ के अंदर स्नान करते सकते हैं, तो वही ऑथेंटिकेट के हिसाब से वो जो भगदौड़ में कुंभ के अंदर मर गए उनके बारे में क्यों नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। सर मैं पूछना चाहता हूं बेरोजगारी के बारे में। प्रधानमंत्री हमेशा भाषणों में बोलते हैं हर साल को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो तो एक जुमला है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं रेलवेज के अंदर 3,15,718 वैकेंसीज across various groups and government is not filling the vacancies appropriately। क्या इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे कि कहां पे क्या क्या फुलफिलमेंट किया गया है? सर जैसे कि हम जानते हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में, महिलाओं के बारे में भी बहुत बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है। मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर इसी सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने रेलवे मिनिस्टर से पूछा कि द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन लॉन्ग रूट ट्रेन्स वेदर इट इज सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड। मंत्री जी ने उनके रिप्लाई में बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। लेकिन उसी दिन एक घटना घटता है सर, एक ट्रेन वेरी सेम डे ट्रेन running between Coimbatore and Tirupati, a pregnant woman was sexually abused. Not only sexually abused, she was even thrown out of the train. इस तरह के इंसिडेंट्स रेलवे के अंदर हो रहे हैं। सर मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं, एक गर्भवती महिला क्या करती है? गर्भवती महिला अपने माँ के पास जाना चाहती है, अपने परिवार के पास जाना चाहती है। मैं तो डिमांड रखता हूं कि गर्भवती महिलाओं को फ्री टिकट दिया जाए रेलवे के, इंडियन रेलवेज के अंदर भी। सर उसी तरह सीनियर सिटीजन्स का हम बात करेंगे। द गवर्नमेंट विदाउट ए वैलिड रीजन withdraw the concessions in the train fare given to senior citizens of the country. This government had not done during the COVID period in March 2020. The government is not restoring the concession of senior citizens. When members raise the issue in Parliament, the minister is saying that government is already given subsidy in the train fare and do not want to extend further concession. Sir, senior citizen concession is a token of respect towards the elderly people of the society. I demand the same may be restored again, sir.
Good, Anil, good. सर, मैं वंदे भारत की बात करना चाहता हूं सर। सर, वंदे भारत जो है इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो एक रफ्तार के साथ चलेगा, वो अपना पैसेंजर्स का टाइम घटाएगा और पैसेंजर जल्दी से अपने मंजिल पे पहुंच सकता है। लेकिन जिस स्थिति है आज है, वंदे भारत ट्रेन जो है जिसका स्पीड लगभग 180 to 200 किलोमीटर पर आवर जा सकता है, लेकिन आज वंदे भारत सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है सर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारे पास वंदे भारत चलाने के उतने फास्ट ट्रैक्स और ट्रैक मेंटेनेंस नहीं है, जिसके चलते हुए आज वंदे भारत का जो स्पीड की गति है वो बहुत ही स्लो हो चुकी है सर। सर, मैं एक इंसिडेंट भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एम्प्लॉयज काम करते हैं रेलवे के अंदर, एक घटना जो घटा है बिहार के अंदर, अमर कुमार राव इन बिहार, जिन्होंने while doing a manual coupling, a railway employee Amar Kumar Rao in Bihar was lost his life. This type of loss of life while doing duty has to be avoided. It is high time that we shift the manual coupling to mechanical coupling, sir. Sir, maintenance of tracks. The Public Account Committee of 17th Lok Sabha, in one of its report, has stated that there is a need of strict checking on tracks, overall safety and security of passengers in the Indian Railways, sir. There is a need of strict precautions regarding the derailment of trains. The maintenance of tracks are very important to ensure the safety and security of passengers traveling in Indian Railways, sir. An RTA inquiry has revealed that Vande Bharat train has been running 83 kilometers despite of capable of hitting 180 kilometers per hour, sir. सर, बुलेट ट्रेन का भी बहुत बातें किया जाता है सर। बुलेट ट्रेन जो इनका पॉलिटिकल मार्केटिंग है सर, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसको चलाएंगे बोल के काफ़ी बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है सर। सर, बुलेट ट्रेन तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है सर। बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से लेके मुंबई जाना है, अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वो क्या स्थिति में है, क्या वो अभी स्टार्ट होने वाला है, किस तरह से चलने वाला है, उसका रफ्तार क्या है, अभी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कौन से सिचुएशन पे है, वो कब इम्प्लीमेंट होगा और कब से उसके अंदर लोग उसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में भी कोई अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है सर। Sir, there is a shortage of workforce shortage in the Indian Railways. Indian Railways currently suffering of shortfall within 1,05,000 vacancies, particularly in the roles of critical to safety such as signaling, telecommunication and track maintenance. At the same time, there are approximately 70,000 posts in safety related to department remaining vacant, including a high-risk zones like South Eastern Railways. There are nearly 20,000 vacancies for loco pilots and assistants loco pilots. However, recruitment for only 18,799 vacancies was notified by the government. The lack of human resources has contributed to increase inefficiency related to error by railway personnel in the critical zones, as they have to work in extended shifts to compensate for the shortage of the staff. And hence, training programs are also essential for improving safety and operational essential. The current system fails to address these human factors comprehensively, reflecting a system of
disagreed of railway safety. सर, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा प्रैक्टिस है, 90 इयर्स का जो प्रैक्टिस चल रहा था उसको तो आपने रद्द कर दिया है, लेकिन एक और परंपरा हम लोग इंडियन रेलवेज के अंदर देखते हैं। जब भी इस तरह के कोई बड़े घटना घटते हैं तो हमेशा जो भी रेल मंत्री होते हैं उस समय के रेल मंत्री वो इस्तीफा देते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि कम से कम वो परंपरा तो नहीं है, कम से कम ये परंपरा को तो आप बरकरार रखेंगे बोल के मैं बात को रखते हुए समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सदस्य। सुश्री डोला सेन जी। Thank you, Vice Chairman, Madam, for giving me chance to speak. Thanks and deep regards to my party, All India Trinamool Congress, and our leader, Honorable Mamata Banerjee ji, to give me opportunity to speak on Indian Railways. I will try to speak in my mother language, Bangla. In fact, India and we, the people of India, will always remember the long tradition of Indian Railways, the lifeline of our country, and of our 140 crore population. আমরা গর্বের সাথে মনে রাখি আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী জি, লালু প্রসাদ যাদব জি, মল্লিকার্জুন খারগে জি সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেলমন্ত্রীর ভূমিকার কথা। আর অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেলমন্ত্রিত্বের অসামান্য সময়কেও আমরা মনে রেখেছি। এখনকার সময়ে রেলের সেই ঐতিহ্য যে তলানিতে, তার সবচেয়ে বড় কারণ রেলের মতো লাইফলাইনকে बेसरकारी करार दिके एगिए निये जावा। रेल को प्राइवेटाइज करने का ये इरादा ही रेल को आज का दुखद दिन देखना पड़ता है। और प्रधानत এই জন্যই 2017 থেকে মোদি বাবুর জমানায় रेल बजेट बंध, आलादा करे और रेल बजेट नहीं, बजेट बराद्द नहीं, ग्रांट्स नहीं। और इसीलिए ही इस साल जनरल बजट पढ़ते वक्त हम लोग रेल का नाम सिर्फ 3 बार सुना है। रेल की सुरक्षा, रेल सेफ्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। কে ছিলেন সেই রেলমন্ত্রী যিনি রেলকে আত্মনির্ভর করার জন্য রেভিনিউ আর্নিং এর দিকে নজর দিয়েছিলেন? তাও আমাদের গরিব দেশে টিকিটের দাম না বাড়িয়ে ফ্রেট পলিসি ডিক্লেয়ার করে সম্মানীয় মমতা ব্যানার্জি। যখন মোদি বাবুরা প্রতি কিলোমিটারে 200 কোটি টাকা খরচ করে বুলেট ট্রেনের গল্প দেন, তখন কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলেন, যেখানে প্রতি কিলোমিটারে মাত্র 25 কোটি টাকা ব্যয় করে চাল ডাল সবজি তেল দুধ সহ সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের গরিব দেশের পিছিয়ে পড়া উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশে কোনটা জরুরি ম্যাডাম, কোনটা বেশি জরুরি? থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি में प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? কে করেছেন সেই কাজ? বিরল ব্যতিক্রমী মমতা ব্যানার্জি। যদিও বুলেট ট্রেন হোক, উই হ্যাভ নো অবজেকশন অ্যাট অল। সব মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি আমাদের গরিব দেশের উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যাতে মাথা উঁচু করে সিনা টান করে রেলে যাতায়াত করতে পারেন তাই 25 টাকার ইজ্জত মান্থলি বানাতে পেরেছিলেন দেশের মানুষকে মর্যাদা দিয়ে? জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি দেশের ইতিহাসে প্রথমবার নন স্টপ রেল পরিষেবা দুরন্ত এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন, যেখানে এসি নন এসি দুই পরিষেবাই আছে। সমাজের সব স্তরের মানুষ ওই দ্রুততম দুরন্ত এক্সপ্রেসের সুবিধা নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। গতির শিখরে থাকা আমাদের প্রিয় মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি রুগ্ন হয়ে যাওয়া রেলের ওয়াগন কারখানা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ব্রেথওয়েটকে অধিগ্রহণ করতে পারেন? রেলের ওয়াগন তৈরির পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং পিএসইউ যেসবকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন? গঠনমূলক প্রশাসক, কনস্ট্রাকটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মমতা ব্যানার্জি। যেখানে উল্টো দিকে বেসরকারীকরণের চক্করে মোদি বাবুরা রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস প্রচুর লাভজনক সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে প্রফিটেবল সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে লিলুয়া কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপকে বিলগ্নীকরণের পথে নিয়ে গিয়ে অতি লাভজনক শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে? কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি গ্রুপ ডি রেল কর্মীরাও যাতে বছরে একবার পরিবার নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন তার জন্য ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করেছিলেন? বলতে পারেন কে কাজ করতে পারেন? তিনি মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে
সেই রেলমন্ত্রী যিনি 2009-তেই ভিশন ডকুমেন্ট 2022 রেডি করেছিলেন লাইফলাইন রেলের জন্য, আইআইটি খড়গপুরের সাথে রেলের রিসার্চের জন্য চুক্তি করেছিলেন, গঙ্গা নদীর নিচ দিয়েও যে মেট্রো রেল যেতে পারে সেই স্বপ্ন দেশবাসীকে দেখাতে পেরেছিলেন, এই অ্যাডভান্স মডার্ন আইডিয়া দেশের কাছে রাখতে পেরেছিলেন, তার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি কলকাতা মেট্রোকে রেলের 17 জোন বলে ঘোষণা করে কলকাতা মেট্রোকে সম্পূর্ণ সরকারি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন? কলকাতা ছাড়া বাকি সব মেট্রোপলিটন শহরে বেসরকারি মেট্রোর কারিগর মোদিবাবুরা যা কল্পনাও করতে পারেন না, জাতীয়তাবাদী নেত্রী नेशनलिस्ट लीडर ममता बनर्जी। मुश्किल का बात यह है कि मोदी जी का करेंट ब्यूरोक्रेट रेल मंत्री जी इतना कुछ जानते नहीं, क्योंकि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम जब ये सब हमारे दीदी ने किया तब ये ऑनरेबल मंत्री जी आइदर वॉन्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे, नहीं तो कोई कंट्रोवर्शियल कंपनी एडलर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे थे। और इसीलिए इस मंडे को ये रेल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बट इन्होंने डिमांड किया नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को भी रेलवे के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स दिया गया, लेकिन सदन में असत्य भाषण देना गैर कानूनी है मैडम। I will try to share with you some figures. Simple arithmetic, madam. Under the UPA, Kerala received 1.43% of the funds given by the Parliament for railways, which has dropped to 1.17% under the NDA. Under the UPA, Tamil Nadu received 3.38% of the funds given by the Parliament for railways, which has now dropped to 2.59% under the NDA. West Bengal received 16.85% of the funds given by the Parliament for railways under the UPA, which has now dropped to 5.46% only under the NDA. সম্মানীয় রেলমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই, আমার দেওয়া তথ্য ভুল প্রমাণ করতে হলে একটু অথেন্টিকেটেড করবেন স্যার, প্লিজ একটু অথেন্টিকেট করবেন। শুধু ভাষণ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আইওয়াশ আর জুমলায় চলবে কি করে? অমৃত ভাষণ স্টেশন স্কিমে 135টা স্টেশনের মধ্যে একটাতেও কাজ শুরু তো দূরের কথা, কাজ করার জন্য টেন্ডার প্রসেসও চালু হয়নি। 453টি 2024-25-এর আপগ্রেডেশনের টার্গেট থাকলেও মাত্র একটি স্টেশনকে আপগ্রেড করার কাজ শুরু হয়েছে। লজ্জা লজ্জা। फिर भी मंत्री जी का इतना एरोगेंस, जरा सा भी शर्म नहीं होता जी। शेम ऑन देम। सेफ्टी कहां से आएगा? लोको पायलटरा, हम सिर्फ थोड़ा उदाहरण देंगे। लोको पायलटरा ना घुमिए एकटाना 36 घंटा ডিউটি করতে বাধ্য হন। তাদের জীবন শুধু নয়, হাজার লক্ষ কোটি সাধারণ নিত্যযাত্রীর জীবনও বিপন্ন। মহিলা লোকো পাইলটদের ন্যূনতম অধিকারের কথা বাদই দিলাম, কারণ পাইলটের ক্যাবিনেট থেকে তারা ওয়াশরুমে যাওয়ার সুযোগটুকুও পান না। 58,000 গ্রুপ সি ভ্যাকেন্সি আছে বলে গত বছরই রেল মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, যাদের মধ্যে 4 ভাগের 3 ভাগই সেফটি সুরক্ষা ক্যাটাগরিতে কাজ করার কথা। शेम शेम। কাস্টমার অ্যামিনিটিজ, প্যাসেঞ্জার অ্যামিনিটিজে 22% বাজেট কাট, 15,500 কোটি টাকা থেকে কমে 12,000 কোটি টাকা মাত্র হয়েছে। তাহলে পরিষ্কার বেডরোল, টয়লেট, স্বচ্ছ রেল কামরা, রেল স্টেশন মানুষ পাবেন কি করে? রেলওয়ে হ্যাজ ফেইলড টু জেনারেট ইন্টারনাল রেভিনিউ ইভেন। Railway net earnings also have remained marginal in 22-23, 23-24. For the current financial year, budget estimate was revised. Budget estimate was revised downward by 52%. দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দিনে 5-6 বার পোশাক পরিবর্তন করেন, আর তাদের রেলমন্ত্রীরা বারবার কথার খেলাপ করেন, ডেডলাইন, টাইমলাইন, প্রতিশ্রুতি চেঞ্জ করেন। এটা কি ভালো? ছি ছি। মোদ্দা কথা, রেলের রেভিনিউ বাড়াতে হবে। রেভিনিউ বাড়িয়ে
দাঁড়িয়ে রেলকে আত্মনির্ভর করতে গেলে বেসরকারীকরণও সমাধান নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিট থেকে রেলের টিকিটের দাম বাড়ানোও সমাধান নয়, ফ্রেট পলিসির ওপর জোর দিন। Eastern Dedicated Freight Corridor EDFC is one of the largest infrastructure projects from Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal that stretches about 1839 kilometers, announced by the then erstwhile Rail Minister Mamta Banerjee ji. পাঞ্জাব থেকে শুরু করে প্রথম দুটি সেগমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ হলেও আজ 12 বছর ধরে শেষ ও তৃতীয় সেগমেন্টের কাজ বন্ধ আছে, যা কিনা বিহারের সোননগর থেকে বাংলার ডানকুনি পর্যন্ত। যদিও এক্ষেত্রে জমির কোনো সমস্যা নেই। নীরজ, ধীরজ রাখ ইয়ার, নীরজ। রেলের কাছে জমির কোনো সমস্যা নেই, রেলের কাছে জমি আছে, এটি ফেলে না রেখে সম্পূর্ণ করলে দেশের মানুষের উপকার হতো, রেলের উপকার হতো, রেভিনিউ বাড়তো, কিন্তু করছেন না। বেসরকারীকরণের চক্করে হকার উচ্ছেদ করছেন, এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সেলফ এমপ্লয়েড আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার ওই হকার বন্ধুদের বেরোজগার করছেন। শুধু তাই নয়, সব স্টেশনে যেরকম বড় বড় কর্পোরেট স্টাইলে কায়দার দামি দোকান বসাচ্ছেন, তাতে কি আপনার রেভিনিউ বাড়বে? কোটি কোটি রেল যাত্রীর মধ্যে 80-90 ভাগই তো গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ, তারা এত দামি জিনিস কিনতে পারে নাকি রোজ রোজ? রেলের ঠিকা কর্মীদের ক্ষেত্রে জেম পোর্টালের বাহানায় 25-30 বছরের চাকরি থেকে বসিয়ে দিচ্ছেন বেআইনিভাবে, তাদের সেন্ট্রাল মিনিমাম ওয়েজ বন্ধ রেখেছেন, পিএফ ইএসআই গ্র্যাচুইটি বোনাস বন্ধ করছেন বেআইনিভাবে। রেলের রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য অ্যারোগ্যান্স ভুলে, ঘমন্ড ভুলে মমতা ব্যানার্জি পলিসিগুলো অ্যাভেল করুন, আপনাদেরই ভালো হবে। রেলের অব্যবহৃত জমি, এয়ার স্পেসকে কমার্শিয়ালি ব্যবহার করা, যাতে অ্যাসেটকে দিয়ে লায়াবিলিটি ওভারকাম করা যায়। সারা দেশে বিশেষ বিশেষ টুরিস্ট স্পটের জন্য, তীর্থক্ষেত্রের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ রেল পরিষেবা ও প্যাকেজের পরিকল্পনা করলেও রেভিনিউ বাড়বে। আত্মনির্ভরতার দিকে এগোবে রেল। রেলের রুটে, রেলের ট্র্যাক বরাবর অপটিক ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক বসিয়ে তাকে কমার্শিয়ালি ইউটিলাইজ করা দরকার, এতে রেভিনিউ বাড়বে। আবার আইটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে রিমোট এরিয়াতে। রেলের মাধ্যমে পোর্ট কানেক্টিভিটিকে যুক্ত করা যাবে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলায় সমুদ্র বন্দরগুলি যে আছে তাদেরকে রেলের মাধ্যমে যুক্ত করলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্য রপ্তানিতে দিগন্ত খুলে যাবে, রেভিনিউ আর্নিংও হবে রেলের। आई रिपीट मैडम, আবার বলছি, प्लीज एरोगेंस के साइड में रख के ममता बनर्जी जी का ये सब तरीका को अपनाइए, घमंड हटा के ये सब मेजर्स लेने में रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगा, रेल का फायदा होगा, रेल आत्मनिर्भर होगा। प्लीज সম্মানীয় রেলমন্ত্রী মহাশয়, আপনার অ্যারোগেন্সকে কমান, ভুল হলে স্বীকার করুন। অহংকারী স্টাইলে ডেডলাইনের ঘোষণা করছেন, বাস্তবে করতে পারছেন না। এমন প্রচার আর আইওয়াস আর জুম লাইন না থেকে কাজে করে দেখান, তারপর কথা বলুন। সদ্য প্রয়াত গণকবি ম্যাডাম, এক মিনিট ম্যাডাম প্লিজ। গণকবি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি লাইন বলতে চাই, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। আপনার প্রেডিসিসর সিনিয়র সব রেল মন্ত্রীদের ফলো করুন, তাদের থেকে শিখুন, রেলের রেভিনিউ বাড়ান, রেলকে আত্মনির্ভর করুন, রেলকে দেশের প্রকৃত লাইফলাইন হিসেবে গড়ে তুলুন। প্রায় 12-13 বছর ধরে পার্লামেন্টে অনেক আলোচনা বিতর্ক আমার এই 3টে টার্মে আমি শুনছি। এমন অ্যাটিটিউড আজকাল দেখছি ট্রেজারি বেঞ্চের, এটা ঠিক না, একে আমি কন্ডেম করতে চাই। বাংলায় জিততে চান, আসুন, পলিটিক্যালি জিতুন, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে লড়ে কমপ্লিট করে জিতুন, ফেয়ার ডিল। কিন্তু ভোটার লিস্টে কারচুপি করে দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো ভোটার বাড়িয়ে পাওনা টাকা হকের করি আটকে রাখবেন, প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা ন্যায্য ডিউ বাকি রাখবেন, লোকের পরিশ্রমের স্যালারি ওয়েজ দেবেন না, আর সংসদে দাঁড়িয়ে পার্লামেন্টে এসে বাংলাকে ডিফেম করতে, অসত্য বলবেন, এটা ঠিক না। নির্মলা সীতারামন জি থেকে অন্নপূর্ণা ম্যাডাম, ধর্মেন্দ্র প্রধান জি থেকে ম্যাডাম প্লিজ, অশ্বিনী বৈষ্ণব জি, সবাই সদনকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন বাংলা সম্পর্কে, অসত্য বলছেন, অথেন্টিকেট করছেন না। আমাদের কাছে ডকুমেন্ট আছে, সব প্রতিটা সত্য সঠিক ইনফরমেশনের কাগজ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, সব বিভাগে বাংলা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের থেকে ফার্স্ট প্রাইজ পায় কি করে ম্যাডাম? ফার্স্ট প্রাইজ দিচ্ছে আর মিথ্যে কথা বলছে, অসত্য কথা বলছে। ভুলে যাবেন না ম্যাডাম, হোগে এক সেকেন্ড, ভুলে যাবেন না এই অ্যারোগেন্স আর জুমলাই আপনাদের 303 থেকে 240 করেছে। এমন চললে এরপর 200 নিচে চলে। मैं अगले वक्ता को बुला रही हूँ। इंडिया আপনাকে Honorable Vice Chairman. धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। प्लीज, उनका टाइम शुरू हो गया है।
Please. Honorable Vice Chairman, thank you for the opportunity given to speak on the working of the Minister of Railways. I would like to address my speech on 7 major heads. The railway projects are very important for the economic development of the state of Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu is for a very long time urging the union government to give and release funds and to expedite 4 or 5 projects. I request the ministry to sanction and give high priority to these projects. 4th line between Tambaram and Chengalpattu, Tirupattur Krishnagiri Hosur new line, Madurai Toothukudi via Arupukottai, about 143 kilometers, Minjur Tiruvallur Sri Perumbadur Varagadam project. This project connects the ports and industrial clusters around Chennai. Semi-high-speed corridor. The corridor can connect Chennai, Salem, Coimbatore with extensions like Salem, Hosur, Bangalore and Coimbatore and Ernakulam. Out of 10 new line projects, only 24 kilometers has been commissioned against 872 kilometers. As for gauge conversion in 3 projects, 604 kilometers has been commissioned out of 748 kilometers. As far as 9 doubling and multi-tracking projects, only 37 kilometers has been commissioned out of 967 kilometers. The reason assigned are land acquisition, forest clearance, and the contribution by the Tamil Nadu government. But as far as the Union Ministry is concerned, the same replies comes year after year, and whether it is a railway budget allocation or budget allocation or the language policy, the Union government always treating the state of Tamil Nadu with a stepmotherly attitude. Because the people of Tamil Nadu have not chosen to vote BJP, the Union government shall not adopt this attitude. Our patriotism is no less than anybody else. Our contribution to the tax, union tax, is no less than anybody. But in releasing the funds to the state of Tamil Nadu, whether it is railway projects, education or health, the union government is adopting a draconian path. Madam, we respectfully remind the union government that we are merely requesting our rightful share. Please understand that withholding what is justly for ours cannot intimidate us. Beyond the universal biological structures of DNA and RNA, we possess a third vital code, an ideological structure, and that is CNA. CNA stands for CN Annadurai. CN Annadurai represents our cultural and political heritage that guides our determination and resilience in the face of adversity. Please read what Perarinjar Anna spoke in this August House 60 years ago. We are still fighting what he fought for 60 years ago. The reasons remain the same till now. So I request the union government, the railway ministry, to immediately execute the projects what I have listed. The second major issue of the railways is privatization. After BJP government came to power, in 2015, when Niti Aayog proposed 2-decade vision to privatize major segments of India's extensive railway network. Since then, this BJP government has implemented various privatization measures through multiple approaches. Workforce restructuring, contractualization and outsourcing have dramatically reduced the workforce from approximately 3.5 million workers to around 1 million. You have reduced 2 million employment in railway. Corporatization is another issue. Production units are being corporatized, with operations like ticketing, catering are now managed by IRCTC and another company, and slowly it can be given in a platter to any other private company. Station redevelopment. The government has targeted
approximately 400 stations for privatization under the banner of redevelopment to match global standards, though progress has been limited. Private train operations. Select trains like Tejas have been handed over to private operators, with the plans to gradually transition railway tracks to corporate management. The case of integral coach factories is still worse. The integral coach factory in Chennai presents a particularly concerning example of this privatization. Despite being one of India's most successful production unit and the indigenous manufacture of Vande Bharat trains, ICF is now being marginalized in favor of multinational corporations. ICF produced Vande Bharat trains at a cost of only 70 crore per train, while the international market price is estimated at the rate of 200 crores. Yet the government has awarded contracts to MNCs at the rate of 120 crore per train, which is 50 crore more than ICF's production cost. Recent agreements of Indian Railways entered with TRSL, an Italian company, in collaboration with Bell, and TMH, a Russian company, in collaboration with Railway Vikas Nigam Limited, are cause of concern. Madam, beyond the higher level of contract values, these private companies receive extraordinary additional benefits. Free infrastructure, government land, utilities like power, gas, water, and existing facilities are provided to them from ICF facility without any cost. 2, intellectual property transfer. Madam, when we are searching for so many intellectual properties and technical know-how from international companies, these companies, private companies, are given the technical know-how and the knowledge of making these Vande Bharat trains given to these private companies free of cost. ICF infrastructures in Chennai were transferred to TRSL, while MRCF in Latur given to TMH company. The union government justifies this only on the ground of shortage of manpower. I'll give only one example. Management justifies this privatization by saying that manufacturing of 116-car Vande Bharat rack requires approximately 227 Group C employees. Number one, 182 direct technicians, 27 supporting staff, 18 technical supervisors. Currently, 22.2% of technical positions and 600 helper positions remain vacant in ICF. When there is lot of employment is there, when lot of unemployed youth is in this country, instead of filling these vacancies, showing that as a reason, you are giving this Vande Bharat trains on a platter with free of cost to the multinational companies. This privatization is not only affecting the Indian Railway, but the people of India at large. So Indian Railways have to concentrate on making the employments rather than privatizing these railways. The privatization of Indian Railways will significantly impact railway fares and accessibility. Railways have traditionally served an affordable transportation for Indians' economically disadvantaged people. Premium train services lead to increased fares, transforming public transport into a service primarily for privileged segments. International examples from China and Japan show that the train transport system requires more subsidization to support broader economic development. Converting public transport into profit-driven industry not only makes travel unaffordable for millions, but also hampers national economic growth and development. Then I'll come to the monetization, the asset monetization. Sir, some time ago, Times of India reported that a core group of asset monetization of the union government
plan to monetize assets of the railways to an extent of 1.7 lakh crore. When the railway board chairman represented that he could not achieve more than 30% and requested to reduce 1.7 lakh crore to 1 lakh crore, the group said, no, it is not allowed. You have to monetize 1.7 lakh crore worth of properties. That means the freight sites, freight terminals, railway colonies, railway grounds, everything is going to be monetized. This will hamper the growth of railways. Ultimately, the people of India will be put in a very disadvantageous position. This monetization, we have to learn from British Railways. In 1990s, British Railways was monetized, fragmented into several companies. Now, UK government realized its mistake and has passed a new law saying that every railway project will come under the government's position. So, we have to take a lesson from British Railways model. The train accidents are another cause of concern. My friend was speaking about what has happened earlier when the train accidents used to happen. Great leaders like Lal Bahadur Shastri resigned immediately. We don't expect such a highest standard of morality, moral standards now. We don't expect the minister to resign, but at least a convincing answers to be given to the public. That is absent totally. Madam, in the past 3 or 4 years, we have lost valuable lives of 400 passengers due to train accidents, comparing to 0 deaths between 2018 and 2021. Why this is happening? This is happening because, again, privatization of the employees. You are giving the line maintenance, the infrastructure maintenance, signaling, everything to contractors. The contractors again giving it to subcontractor. Third tier of subcontractor is coming. The employees under those subcontractors do not own the system. As long as they don't own the system, these kind of accidents will definitely happen. Instead of that, if you employ persons in the railways itself, they will own the system. The accidents will reduce much.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें। आइटम नंबर 19 तेल क्षेत्र विनिमय तथा विकास संशोधन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to move that the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024, further to amend the Oil Fields Regulation and Development Act 1948 as passed by the Rajyasabha, be taken into consideration. Only if she gives me that. Madam, in the year 2014, when the Honorable Prime Minister assumed responsibility, between then and now, we have moved from being the 11th or 10th largest economy in the world to being the 5th largest, and we are very shortly going to be the 4th largest, and if the assessment of the International Monetary Fund is to be believed, we will be the 3rd largest economy by 2027. Economic growth and the size of GDP, as my friends on all sides of the House will agree, is heavily dependent on the utilization of energy. In fact, when you look at any energy, madam, any economy, and you look at the energy consumption, a reasonably good indicator of economic performance comes from the utilization of energy. Today, we are currently consuming 5.5 million barrels of crude oil in a day. When I had the privilege of being associated with this ministry, madam, 3.5 years ago, we were consuming 5 million. If we continue to grow at 6.5%, 7% rate of growth, it is only a matter of time that we will be consuming 6, 6.5 and 7 million barrels of crude oil in a day. Madam, our journey to become a Viksit Bharat by 2047 or to become a $30 to $40 trillion economy by 2040 or thereabouts will require large amounts of energy in all forms. Today, we are in the happy situation of saying that out of the 3.5 million square kilometers of sedimentary basin that we have, 1 million square kilometers of that sedimentary basin was a no-go area. In other words, no prospecting could be done there. And as a result, our import dependence, both in terms of crude oil and natural gas, was on the rise. Today, I'm very happy to share with this House that 76% of all the prospecting and exploration that is being done in our sedimentary basin is being done in areas which have been freed up after 2014. Wow. In fact, between the years 2006 and 16, which we often in our trade call the dull decade, very little work was done. And madam, oil and gas is a sector which is heavily capital intensive, which has long gestation periods, and any decision that you take today or the government of the day takes today will begin to show results only 3, 5 or even 7 years later. I'm very happy to report that it is a result of various measures that we have undertaken, and I shall list a few of them. In 2016, we moved from production sharing arrangements to revenue sharing arrangements. And when
we were in 2014, out of the 3.5 million square kilometers of sedimentary basin, the amount being used was exploited was only 6%. We have to take that to 15%. In spite of our efforts, we have been only be able to raise it from 6 to 10%, but that's a major jump. Therefore, in the coming time, we will have to do more, and that is the starting point of my presentation on why this piece of legislation passed by the Rajyasabha is coming before this August House today, Madam. Madam, India's hydrocarbon resource potential is immense. We have something like 42 billion tons of oil and oil equivalent of gas, which remains to be tapped. This is, by any yardstick, a very resource-rich Bharat. But prospecting and looking for oil and gas is an expensive business. Any well which is dug onshore costs something like $3 to $4 million per well, which under today's exchange rate comes to 33 to 35 crore rupees. And if the drilling is offshore, the cost is even higher. It comes to $100 million. Now, all the resources that we have at our disposal, the private sector, the state oil marketing companies and the government, we don't have the resources. And typically in the exploration and production sector, Madam, let me give you the case of Guyana. They dug 16 wells and they did not find oil and gas. It is not that 17th well that they found or they struck gold, as it were. I am very confident that with the efforts that we are making now and with the ecosystem which will come into being as a result of the legislation which is before this August House today, we will find many Guyanas in the Andaman Sea. And as we move forward, our requirements, not only for our domestic consumption, we are both producers, we are consumers, we are importers, we are also exporters. India is today occupying a very important place in the global energy market on all fronts. Madam, we moved in 2016 from a production sharing to a revenue sharing agreement. In 2018, the government reformed policies to promote coal bed, methane and enhanced oil and gas recovery methods. We also allowed CBM operations by coal miners. In 2022, we opened up 99% of the no-go areas, as I mentioned, out of the 3.5 million square kilometers, 1 million square kilometers, which was a no-go area, has been opened up. And Madam, I'm very happy to inform this House through you that when we had the 9th round of open acreage licensing policy, 38% of the bids which were received were part of this 1 million square kilometers of no-go area. Madam, the E&P, exploration and production industry, is blind without seismic data. To reduce the fear of investment becoming a sunk cost on account of no prospective discovery, we gave impetus to the acquisition of quality geological and geoscientific data by launching various programs such as National Seismic Program, Airborne Gravity and Geomagnetic Survey, Exclusive Economic Zone Survey, setting up of National Data Repository and hydrocarbon resources. I'm very happy to inform you that government has approved the acquisition of additional 2D seismic data of 20,000 LKM on land and 30,000 LKM in offshore. There are various other activities which we have undertaken to make the Indian market, Indian exploration space more attractive. And I'm confident that companies like Exxon, BP, Chevron, Total, ENI, which had left India, they are not only showing interest in coming back, many of them have already started partnering our OMCs, as in the rejuvenation of Bombay High, seismic survey by a Brazilian company, Petrobras, with Oil India in the Andaman Sea, and so on and so forth. We have already increased the explored area, as I mentioned, from 6% to 10% of the sedimentary basin, but we are very confident that with the steps in hand, we will take it to 15% of the sedimentary basin. In addition, Bombay High Basin, through exploratory efforts, has more than doubled between 2014-24 as compared to 2004 and 14.
We are also re-engaging with international oil and gas giants to fully help us and jointly explore our E&P. We have successfully awarded 144 blocks through competitive bidding process covering 2.5 lakh square kilometers and secured commitment investment of $3.37 billion under OALP from round 1 to 8. Of these, 131 blocks are under active exploration and some discoveries have been made. Madam, I will fast forward. Why are we bringing this bill? For a number of reasons. We used to have, Madam, an original law which was enacted in 1948. It was a common law to cover both mining, quarrying and petroleum leases or mineral oil. Then in 1957, a separate law for the mines and mineral sector was enacted, namely the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. While the parent legislation was rechristened the Oilfields Regulation and Development Act 1948, all the terminologies within the Act continue to remain the same, and we are seeking to change that today. We are also introducing a single permit system for all types of mineral oil exploration, be it exploration, development, or production of conventional oil and gas, or unconventional hydrocarbons like shale gas, tight oil, or tight gas. The bill also seeks to clarify the meaning of the term mineral oils, particularly in its modern context, so as to promote exploration and production of new fuel options like shale gas, shale oil, coal-based methane, natural gas, gas hydrates. The bill also seeks to facilitate development of comprehensive energy projects and new technologies such as carbon capture utilization and sequestration, CCUS, green hydrogen, etc., all of which will help us achieve net zero status by 2070. The bill proposes a new framework for sharing of resources and infrastructure between different operators to improve viability of oil blocks. Madam, the oil bill also aims to resolve one of the biggest grievances of global oil companies interested in investing in India by providing stability in operations, both in terms of tenure of the lease and condition. It is my firm belief, based on my experience for the last 3.5 years, Madam, that stability and predictability for a foreign investor where large amounts of investment are required in the infrastructure sector are absolutely crucial, and this bill seeks to do that. We also propose to substitute an acrimonious mode of dispute resolution with fast and efficient alternate dispute resolution mechanism, which will ensure disputes can be resolved in a timely, fair and cost-effective manner. There were also some punitive provisions, such as a fine of 1,000 rupees, which made the provisions almost meaningless. We are substituting that by 25 lakhs rupees up to 10 lakhs per day for continuing infraction. The bill will, in summary, Madam, add to ease of doing business and make India an attractive destination. I want to conclude, Madam, by also a brief outlining, because I know many of my dear friends and members in the opposition will take the floor, to say what the bill does not do and will not do. The bill does not alter the rights of states. For on-land areas, the states will continue to give petroleum leases and receive royalties as before. That is the situation now. That is the situation which will continue. The bill does not alter the existing level playing field and offers no preference to either private or public sector. In fact, I heard some comments originally, but when I spoke to in the Rajyasabha and the bill was passed there, I think that point has not been repeated because it is amply clear within the text of the legislation and otherwise. Removal of criminal punishment would encourage infraction. This is a civil and commercial legislation. Criminal matters will continue to be tried under the relevant criminal laws. And to deter infractions, we have increased the penalties and provided for their expeditious adjudication. The bill grants no exemptions from the need for compliance with environmental standards. Additionally, our contracts mandate it and also provide for site restoration. The bill also provides for decarbonization and development of comprehensive energy projects. Madam, insofar as the fate of existing
contracts is concerned, existing leases and licenses will continue to be valid for their respective tenures, subject to terms and conditions governing the grant of such leases and licenses as provided in the savings clause of the bill. I hope this will reassure my colleagues from different parts of the House. There is no change in the rights of the states, which they will continue to enjoy these rights, and there is no attempt or even thinking of curtailing those rights. Madam, with these words, I will conclude my presentation. I look forward to the participation of my colleagues in the House, and it would be a privilege and honor for me to respond to those observations. I thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Madam Chairperson. I rise to speak on the Oil Fields Regulation and Development Amendment Act 2024. Before I commence my submissions, on a lighter note, I would like to say that it was good to hear the reply to the bill even before the discussion had commenced. So therefore, this seems to be a new precedent in the House that even before a discussion on the bill commences, you have the minister preempting and trying to offer justifications which he could have very much offered at the end of this discussion. Now, the statement of objects and reasons of this bill, and with your permission, Madam Chairperson, I would like to read out a line or two. It says in para 2 that the said act, which provides for a very different global energy context. So therefore, the rationale for amending this bill, according to the statement of objects and reasons, is that the global context has changed. I do not think anybody can have a quibble with it, because the global context changes on an everyday basis, especially when you have mercurial people in office in some parts of the world. But however, I would like to point out that India's quest for energy security and India's path towards facing and confronting these challenges has been a continuum now going back almost 5 decades. India weathered the first oil shock in 1973, when overnight, from $3 a barrel, the price of oil, crude oil, rose to $12 a barrel. India weathered the second oil shock when the Iranian Revolution took place, when there was again a spike in the price of oil. India weathered a third oil shock in 1991, when the first Gulf War commenced. And so therefore, I would very humbly like to point out to my colleagues on the Treasury benches that history did not start in 2014. History started much earlier. Yes. I think there is a need to be cognizant if you want to rise above partisan politics and really make this into a discussion about India's energy security rather than a he said, she said point scoring, which unfortunately is what commenced this debate. What is the global context today, Madam Chairperson? The global context today is that you have an ongoing conflict between Russia and Ukraine. You have a conflict between Israel, Hamas, Houthis, Hezbollah, by extension, certain other sovereign Westphalian states. And then you have the continuing rise of China since 2013, which has not been a too peaceful rise, and it has implications both for India's national security and, by extension, energy security, which is a subset of that larger, overarching construct of national security.
So therefore, our vulnerabilities remain. The three choke points, which actually are the Achilles heel of the global energy trade, the Straits of Bab al-Mandab, the Straits of Hormuz, the Straits of Malacca, they still continue to be the existential dilemma for all energy importing and energy producing and energy consuming countries. And unfortunately, and this is not to apportion blame on anybody, but globally also and through collective efforts, we've not really been able to find a solution, a reasonable, sustainable solution to these existential security dilemmas which have an impact on the largest energy consuming nations in Asia, be it India, be it China, be it South Korea, be it Japan. That continues to be a continuous Achilles heel. Of course, we've had some windfalls over the last couple of years. The Russia-Ukraine war, in a certain sense of the word, was a crude oil windfall for India. And not only for India, for China, for Turkey, for various countries, even in the European Union, which while supporting the sanctions against Russia, actually round-tripped their energy needs. And therefore, it's very interesting that India's oil imports from Russia in 2021 were 4.54 million tons. In 23, it increased to 88.92 million tons. We bought crude oil worth $49 billion from Russia. And I'm not saying that there's anything wrong with it. Every country acts in its own best national interest. And therefore, if we were getting access to cheaper crude oil and we availed of that opportunity, I am not going to have a quibble with the government on that. All that I'm going to point out is that these windfalls do not happen every day. And we need to be prepared. We need to be prepared. We need to be future ready, which unfortunately we are not. And I'll point out as to what the factual situation is, despite the claims which the Honourable Minister has made. In the year 2014-15, our production of crude and natural gas was 37.461 million metric tons. Our import in 2014-15 was 189.432 million metric tons of crude oil. The average price of crude was about $84.20 per barrel. In 2023-24, our crude oil production has actually declined to 29.4 million metric tons. Our crude oil import has actually risen to 243.3 million metric tons. The average price of the Indian basket of crude oil as on the 10th of March 2025 stands at $70.65 to a barrel, which is almost about $10 less than what it was. Madam, you'll have to give me some time because this is an important subject connected with India's energy security. There are not many people in this House. So therefore, under those circumstances, allow me to complete. I'll need about 7 to 10 minutes more. I request your indulgence. And the average price was about almost $9 or $10 less than what it was in 2014. The unfortunate situation today is that in the year 2023-24, we imported 87.8% of our crude and oil gas and natural gas needs.
the figure could be almost as high as 90% today. It raises a very legitimate question as to what really has this government been doing over the past 10 years in attempting to bring down this import dependency on oil and natural gas. Let me come to Mumbai High. The Mumbai High crude oil and natural gas oil field at its peak was producing 476,000 barrels per day. What is its production now? 134,000 barrels per day. Notwithstanding the collaboration with Chevron, with ExxonMobil, and the large oil majors, which Mr. Hardeep Puri referred to in his introduction to the bill, the fact is that the Bombay High collaboration has not boosted the oil production. Minister, when you get your chance, you'll get a chance to reply. We never interrupted you, heard you very peacefully. So therefore, when you get a chance to reply, we'll be here to hear you. Similarly, shale oil and gas. Now, according to estimates, there's 96 trillion cubic feet of gas and 1 billion barrels of shale oil in Cambay, Krishna Godavari and the Kaveri Basin. What has the government done in the past 10 years to tap the potential of shale oil? Why is there no explanation for what has been done over the past 10 years? This bill is not coming as if this government was sworn in yesterday. This government has been in office for 11 years now. So I would like to ask, what has this government done with regard to trying to explore shale oil and gas, which incidentally has made America almost self-sufficient insofar as their oil and gas needs are concerned? The Honourable Minister, Mr. Prahlad Joshi, to whom I had the honour of asking a question in the morning, which he chose to duck, but well, that's his prerogative, had said that 100 million tons of coal gasification and liquefaction would be achieved by 2030 by investing 4 lakh crores. I would like to ask, where are we in 2025? You have a target for 2030. Where are we with regard to coal gasification and liquefaction? How much of this target really has been achieved? So what you require, in addition to a law, is actually a roadmap to make India energy sufficient, which unfortunately is completely missing. I would like to end by just 2 or 3 suggestions, Madam Chairperson. There's a need to think out of the box. The Minister was absolutely correct. Oil exploration and gas exploration costs a lot of money. And that money, unfortunately, is not readily available in the amounts and volumes that it is required. I'm not suggesting that you go back to the wildcatting days of the Wild West. But what is the government planning to do to encourage independent oil explorers? After all, there's a whole community around the world of independent oil explorers. Does your bill have anything that incentivizes these independent oil explorers, in addition to, of course, the oil majors whom you are wanting that they come in? And if they do, that would be more than welcome. Similarly, there was an international energy forum in Riyadh. The minister is aware of it, given his long years in India's diplomatic service. Now, that forum was essentially created to facilitate a consumer-producer dialogue. How much of a role is India proactively playing in this forum in order to ensure that there is a dialogue between consumers and producers, especially given the fact that we import 90% or 87.8% as of 2023-24 of our oil needs? So therefore, the reality is the Indian economy even today is hydrocarbon dependent. And out of that hydrocarbon dependency,
65 or 55% of it is still coal. It is not even oil and gas. So therefore, I would like to request the government, you need to come out with a proper strategy which takes into account hydrocarbons, intermediates, and renewables in a holistic manner. So therefore, you have a roadmap to energy self-sufficiency by 2050 or by 2060. Insofar as your bill is concerned, Mr. Minister, it makes minor changes here and there. So it's more of a technical bill. What is really missing is a vision. What is really missing is a roadmap. And as I started by saying, you are not a government which was sworn in yesterday. You are a government which is 11 years old. And you need to account for the fact that what have you done over the past 11 years. Thank you. माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। धन्यवाद सभापति महोदया। I stand for supporting the Oilfield Regulation Development Amendment Bill 2024, which was tabled by Honorable Minister Shri Hardeep Singh Puri ji under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Madam Chairperson, I belong to a oil and natural gas producing state of our beloved motherland. You all know the first refinery, or you can say the Asia's first refinery and one of the oldest refinery, established in 1901 in Deepgoi. And thereafter, in 1974, we have started another refinery. It is in Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited. And thereafter, in 1993, we have started the third one, that is Numaligarh Refinery Limited. So, I belong to that rich oil and natural gas producing state, not as said by some member of the House day before yesterday, that you are from state of Lahe. We are not representing the state of Lahe. We are representing the strong and vibrant economy of India, which is a major contributory state in the oil and natural gas sector. Madam Chairperson, as I heard our learned Parliament member, who represent the Congress Party, Manishji, he said that it's not the year of 2014. Yes, all the people of India, all the members of Parliament and the world knows that it is not the history of 2014. If you goes back, it's the history of 1901 in India, when Congress also not here,